Okay, students, so let us see this question. Average of a non-decreasing sequence of n numbers a1, a2, and so on till an. Okay, this is not y, this is n. I'll correct it here. This is n. So there are n numbers from a1 till an, and the average is 300. Now, further it is given if a1 is replaced by 6a1. If a1 is replaced by 6a1, the new average becomes 400. Then the number of possible values of a1 is. तो पहले तो यार इक्वेशन ही बना लेते हैं, राइट. a1 plus a2 plus a3 and so on till an, राइट. ये n नंबर्स का टोटल है. So that would be equal to 300 into n. Now if a1 is replaced by 6a1, so now अगर मैं a1 को 6a1 से रिप्लेस कर दूं, so I'll get another equation 6a1 plus a2 plus a3 and so on till an, right. Again we have n numbers only. The average is 400, so the total will now be 400n. And now if we subtract from the second equation, if I subtract the first equation, right, so we'll get 5 times a1. 5 times a1 will be equal to 100 times n. Or I can also say that a1 will be equal to 20 times n. क्वेश्चन में यार देखिए हमसे पूछा गया नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a1 इज. अब देखिए ये तो पक्का है कि a1 क्या है, 20 इंटू समथिंग है. नाउ वी नीड टू सी इज n इक्वल टू 1 पॉसिबल. लेट्स पुट n इज इक्वल टू 1 एंड चेक. देखिए अगर मैं n को 1 पुट करता हूं, assuming that there is only one term, okay, I'm assuming there is only one term. So if n is equal to 1, in that case students I'll get a1 is equal to 20. And now students if there is only one term, अगर एक ही टर्म है और उसकी वैल्यू 20 है, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझे, क्योंकि मैंने n को 1 पुट किया, दैट मींस देयर इज ओनली वन टर्म एंड दैट वन टर्म इज a1 ओनली. उसकी वैल्यू 20 है. तो यार एवरेज 300 कहां से होगा, है ना, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है कि n नंबर्स की एवरेज ही 300 है. तो अगर एक ही टर्म है उसकी वैल्यू 20 है तो एवरेज तो 300 होगा नहीं. सो दिस मींस दैट n इज इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल, विच we can also say that a1 is equal to 20 is not possible, है ना, क्योंकि जब n is equal to 1 possible ही नहीं है, that means a1 is equal to 20 is also not possible. Now if you put n is equal to 2, that means I'm assuming there are two terms, okay, I'm assuming there are two terms, and if there are two terms, so students can I say two terms, so that means a1 plus a2, average is 300, okay, average is 300, so that means a1 plus a2 will be equal to 600. Now mind you, when n is equal to 2, when n is equal to 2 students, in that case can I say a1 will be equal to 40. तो मतलब जब मैं n को 2 पुट करूंगा तो a1 की वैल्यू 40 आ जाएगी और a1 plus a2 600 आ जाएगा. Now if you put a1 as 40, you will get a2 is equal to 560. Now see, what I'm trying to tell you is that this case works perfectly. आप देखें a1 की वैल्यू 40 आ रही है, a2 की वैल्यू 560 आ रही है, राइट. देयर आर टू टर्म्स एंड ऑब्वियसली दे आर नॉन डिक्रीजिंग, है ना, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है 40 के बाद 560 आ गया. तो यार ये वाली वैल्यू पॉसिबल है, right. So I can say that a1 is equal to 40 is possible. So that means when n is equal to 2, a1 will be equal to 40. This case works perfectly. So ये सही है. एक एग्जांपल और ले लेते हैं यार. अगर देखिए मैं n की जगह 3 पुट कर दूं, अगर मैं n की जगह 3 पुट करूं, this means that a1 will be equal to 60. Now I just need to see whether it is working or not. From here I can say that a1 plus a2 plus a3, because there are three terms, average is 300. Average is 300, that means a1 a2 a3 का total will be 900. And I know that a1 is 60. If a1 is 60, that means a2 plus a3, okay, a2 plus a3 will be equal to 840. हाँ तो यार इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, है ना, जहां a1 60 होगा, a2 और a3 का टोटल 840 होगा, एंड a1 a2 a3
ऑब्वियसली दे विल बी नॉन डिक्रीजिंग, मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो मतलब जब n इज इक्वल टू 2 लिया वो भी पॉसिबल है, n इज इक्वल टू 3 लिया वो भी पॉसिबल है। ओके, सो दैट मीन्स a1 की जो वैल्यू है दैट कैन बी 40। जब मैंने n को 2 पुट किया बोला केस वर्क करेगा। n इज इक्वल टू 3 पुट किया तो a1 इज इक्वल टू 60। तो ऐसे यार कहां तक मैं लूंगा 20 के मल्टीपल्स, है ना। सी लास्ट मल्टीपल ऑफ 20, now listen to me very carefully, last multiple of 20 which you can take is obviously 300। a1 की जो लास्ट पॉसिबल वैल्यू है वो 300 ही हो सकती है। क्योंकि आप खुद सोचें, अगर आपने a1 की वैल्यू, अगर आपने a1 की वैल्यू 300 से बड़ी ली, now let me show you, if I take a1 to be let's say 320, so can I say if a1 is equal to 320, that means ऑल दी अदर वेरिएबल्स, मतलब a2 a3 जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबकी वैल्यू 320 या 320 से बड़ी होगी, बिकॉज सी इट इज मेंशन्ड इन द इक्वेशन नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो अगर a1 की वैल्यू 320 है, so I'll write it here, that means a2 a3 a4 and so on, all of them students will definitely be greater than or equal to 320। अब यार अगर हर एक वेरिएबल की वैल्यू, अगर हर एक वेरिएबल की वैल्यू 320 या उससे बड़ी है तो एवरेज कभी 300 नहीं आ सकता ना, एवरेज कभी 300 नहीं आ सकता। सो दैट मीन्स द लास्ट पॉसिबल वैल्यू विच यू कैन टेक फॉर a1 इज 300। So now this becomes a proper AP. How many terms are there? I hope all of you can calculate it. या आप ऐसे भी कर सकते हैं, this is 20 into 2, this is 20 into 3, and last term is 20 into 15। so from 2 till 15 है ना, from 2 till 15, so these are total of 14 terms। 14 is the correct answer। Okay, I hope this question is clear to all of you।